याद आ गया। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज के 2843वें पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ वेटरनरी मेडिसिन पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें भी एडवांस्ड वेटरनरी मेडिसिन एंड हर्बल एडवांस्ड मेडिसिन। तो एडवांस्ड वेटरनरी मेडिसिन, हर्बल वेटरनरी मेडिसिन, इसके निष्णात आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा जी हमारे साथ हैं। रिनाउंड वेटरनरी एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं यूपी गौ सेवा आयोग के। और मैं क्या सूर्य को दिया दिखाऊं, क्षमा चाहता हूं। लखनऊ से हमें आशीर्वाद देते हैं और मैं उनके और आपके बीच में दीवार न बनते हुए आदरणीय गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने विषय पर हमें मार्ग निर्देशित करें। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा। ये विषय जो था, पहले आपने मुझे भेजा है था, नहीं, उसमें था। आप जो बोलेंगे हाँ, वही आशीर्वाद है। विषय वन्य पे जीव क्या चर्चा संरक्षण, कर रहे हो? वन्य जीव संरक्षण आपने मुझे लिखाया था। हाँ, वन्य जीव संरक्षण। वो अच्छा। हाँ, ये रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम मिला नहीं नहीं, करेंगे, कर लिया कल जो जाएगा। फोन किया हूं मैं हाँ इंटरनेशनल हाँ। डे ऑफ वेटरनरी मेडिसिन पे किया हूँ। नहीं, अब मैं मुझे लाइव जो है सर। लिखा है, मुझे लाइव जो है सर लिखा अब। है कोई उस बात पर नहीं सर, वन्य उस जीव पर संरक्षण। चर्चा कोई बढ़ाने बात से नहीं, फायदा नहीं। कोई बात नहीं, उसको जी सर, कोरिलेट कर आप इसके कोरिलेट भी कर देंगे। मालिक हैं, आप उसके भी मालिक हैं। कोरिलेट कर देंगे। मेडिसिन के ऊपर बात करना है ना। हाँ, जी। अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ चाहूंगा कि हमारे जो पशु है ना, आवाज आई। आई आई। हाँ, तो आज जो है 10 दिसंबर के लिए जो है एनिमल राइट्स डे है। एनिमल्स के जो अधिकार हैं उनके प्रति है। और एनिमल्स के अंतर्गत छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़ा जीव, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, सारे के सारे जीव जो हैं वो पशु की श्रेणी में आते हैं। ये परिभाषा किया की जा चुकी है 1962 में। के तो उनके राइट्स भी हैं। और राइट्स क्या है अब वाइल्ड में? सर मैं एक प्रार्थना करूं, जी। बुरा न माने तो। नहीं नहीं। अभी हम चर्चा कर ले वेटरनरी मेडिसिन पे, मैं आधा हाँ, घंटे के अंदर दूसरा डिजाइन बना देता हूं। अच्छा अच्छा उस अच्छा। पे एनिमल राइट्स पे होगी, क्योंकि टॉपिक कुछ है और टाइटल कुछ। तो यूट्यूब मुझे नोटिस भेज देगा। मैं डिजाइन डेवलप कर रहा हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं वेटनरी ट्रेडिशनल वेटनरी मेडिसिन पे आता हूँ, क्योंकि आज सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि इस समय हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा इस समय काफी प्रोपोगेट कर रही है। और उसके अंतर्गत ये आवश्यक हो गया है कि हम ऐसी औषधियों के संबंध में जानें कि जो वास्तव में बहुत ही लाभकारी हैं और ह्यूमन और वेटरनरी दोनों के अंदर कारगर होगी। सबसे पहले वाइल्ड के अंदर फैमिली कशटू, यानी कटाचू, ब्लैक ब्लैक कटाचू, ये पेड़ होता है जो कि इंडिया के अंदर और इंडस फॉर्म के अंदर, आसाम भाग के अंदर बहुत पाया जाता है। और इसके लिए संस्कृत के अंदर खदवा कहते हैं और हिंदी के अंदर खीर कहते हैं। क्लियर?
ये मेडिसिन जो है, ये जनरली is regarded as an astringent, cooling, and digestive, useful in relaxed conditions of the throat, mouth, and gums. Also in cough, diarrhea. Externally, it is employed as an astringent and as cooling application to ulcers. This is applicable in human and veterinary both. वेटरनरी के अंदर ये कैटेचिन जो है is an extract of the leaves and young shoots of acacia. Amber is a powerful astringent. It is prescribed in persistent diarrhea and in dysentery, especially in horses and cattle, in combination with prepared chalk and carbonatives such as ginger powder. In severe cases, opium may be added with the advantage the mixture is best administered in well-boiled flour gruel. Dose: horses 30 ml to 60 ml, cattle 7 ml to 21 ml, sheep and pig 2 ml to 3.6 ml, dogs 300 milligram to 900 milligram. इसके अंदर टिंचर भी इसका बनाया जाता है और एल्कोहल के साथ में 45% और डोजेज जो हाउस के अंदर 30 ml to 60 ml देते हैं, डॉग्स के अंदर 0.6 to 3.6 ml देते हैं। नहीं, आप तो तो डिसीज वाइज करते हो, दो चार जड़ी बूटी एडवांस हाँ, ट्रीटमेंट डिसीज वही वाइज बता रहा बता हूँ। देते। नहीं, ये तो हाँ एक वही जड़ी बूटी पे बहुत देर हो जाएगी, है। इसीलिए एक एक जड़ी बूटी का नाम भी काफी है नाम अब काफी है। डिसीज वाइज। डिसीज लाइफ में बता रहा था कि इट इज पाउडर विद कटेचू and in अरे 240 gram linseed and urea and given orally 2 to 2 times. जैसे पहले बोलते थे ना सर कि जी जी। इनको घोड़ों को ये काम आता है, हाँ इनको ये, वही तो वही ये वही मेरे को वही। कोई सर, ये तो अपन जनरल पब्लिक को बना रहे हैं ना यूट्यूब वीडियो। हाँ तो इसीलिए हम इसीलिए साधारण सबके भाषा लिए में, बता। साधारण भाषा में हम लोग यदि उसका बताएं, घोड़ों के यदि ये हो जाए, बकरी को ये हो जाए, ठीक है। लाइक दैट सर। Dendrita nut family Astragia is the occurrence in condition many parts of the Himalaya regions, especially नहीं नहीं, around Shimla. Parts, dried parts and flowering points. वर्नाक्यूलर के अंदर हिंदी में इसके लिए गंदना कहते हैं और वही मैं और कह रहा हूँ सर, एक एक जड़ी बूटी में इतना लंबा हो जाएगा कि नहीं अपन नहीं पूरा मैं बहुत विषय शार्ट आधा शार्ट घंटे में शार्ट में कवर नहीं कर पाएंगे। शार्ट में कर रहा हूँ मैं। तो मैं बोलूं सर, एक मैं 5 मिनट मुझे प्रेजेंट करने को देंगे, उसमें आप गाइड करते जाइएगा, क्योंकि अच्छा। लाइव है ना हम लोग सर। जी जी जी। 1 मिनट। यदि हम बात करें वेटरनरी डोसेज फॉर्म्स की, जो आज ये वेटरनरी डे है, तो द मेडिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस पर्पज और क्योरिंग द डिसीज इन एनिमल्स आर नोन एज वेटरनरी डोसेज फॉर्म्स। Just Gurudev has taught me animals are not like humans. They have different species, herbivorous, omnivorous, carnivorous, horse, sheep, goat. Everybody knows this. So I am not going into detail. Gurudev will guide me. So between species differences, comparative physiology of digestive system, skin type, respiration, and behavior, all are different. So we have to give this. Every species have differences, but their uh, digestive system. Pigs, dogs, cats having intestinal
pH 5.3, horse having intestinal Horse pH having 7. 7. Yes, so skin type, now drug formulation of tropical, they means it will be My different from the species, from species. That pigs have cow, extensive layer of keratin. And cows, dogs, cats not having ability to sweat properly. Pigs yes, have extensive layer of keratin. right, sir. Next, चलिए, respiration is important for successful inhalation therapy. The absorption of the drug by respiration depends upon the drug practice, size, implementation, inspiration, volume, and range. For example, respiration rate of birds varies from 46 to 380 respirations per minute, horse 12 per minute, cow 30 minutes per minute. Next, water loving bees shows problems, cats are constant groomers, and any drug substance applied topically likely to be injected, even disinfectant and other chemicals causes toxicity. Next, physiological consideration, drug sensitivity as according to the age, sex, pregnancy, and disease states. Next, variation in the drug sensitivity due to species difference. For example, dipixethine is highly sensitive in bull than other animals. Next, newborn animals susceptible to toxic effects by many depressants and stimulants of central nervous system. Newborn having deficiency of in drug elimination, newborn having more water content as compared to mature animals, which affect the drug distribution. Drug metabolism varies by sex as male or female. For example, males, rats having the high rate of metabolism as compared to female rats. Next, pregnancy causes dehydration. It affects the distribution of the drug. Due to this factor, drug formulation for animal in pregnancy state taken in consideration. Next, distribution of drug affected by disease state like renal failure, heart failure, dehydration. This is the physiological condition taken in consideration. Next, next, animal health past few years become more essential for the following reasons. According to Animal Health Institute Domestic Sales Survey, $4.32 billion priced. Zoonosis, the diseases of animals, may secondarily transfer to humans. In 1960 and 1970, two pharmacy colleges offered the courses in agricultural pharmacy and veterinary therapeutics. University of Iowa College of Pharmacy, South Dakota University. Next, some pharmacological bases used exclusively in animals. Number one, xylene, sedative, analgesic, ditomidine, and pre-anesthetic medication, acetylpomidine, pre-anesthetic medication, fluoxetine, anti-inflammatory, and azipirone,
pre-anesthetic medication. Next, some of the drugs cannot be used in animals. Those are chloramphenicol, diethylstilbestrol, and varicocomycin. Next, classification of veterinary delivery devices. Because of the variety of doses forms in veterinary medicine and the diversity of animal and world species, treated drug or doses delivery sometimes requires the development of specific devices to ensure fast, safe, effective, and low cost efficient treatment. Oral devices, topical devices, parental devices, and nasal devices. Next, oral devices, Walling guns, esophageal delivery devices, drench syringes, liquid drench guns, powder drench guns, paste dispensing, water medication, metrizing devices, human lodging devices, hollow bits, non-pyloric passage devices, miscellaneous overdose dispensers, and Vident devices, prolonged release devices. Next, topical devices. Pour on spot on application, dust bags, spray, race and dip, teeth dip, aerosol dispensers, filly and tick collars, percutaneous devices, percutaneous devices. Next, single dose syringe. Syringe are used to express the hydrated OTC free injection formula through the back of the valve and into the palm. Single dose syringe is figure there. Automatic syringe. The vial holder model of this automatic syringe is often used for vaccination or injection or of swine. The automatic syringe are multi-complemented compartment syringes, multi-compartment syringe for storing two or three substances in separate compartments. Next, pole केवल नाम भी mounted लेते चलेंगे तो काफी है सर, नाम भी लेते चलेंगे. pole mounted syringe used for remote administration of medications. Long, long needles are used which are secured on housing and that supports the needle to prevent its breakage. Mastitis syringe drug formulation can be delivered to the site of the infection in a cow with mastitis. Needles can be inserted directly into the mammary gland through the teat canal. Jet injections, dose of liquid medicaments is expelled under the extremely high pressure against epidermis of the animals, used to vaccinate a large number of animals and birds. Projectable delivery system used to deliver drugs parentally from a distance. Next, next, implanting devices. Three types of implanting devices are used in veterinary practice. Pallet implanting devices,
ball implanting devices, and mold, molten, melton implanting devices. Next, next, implants. These are generally smaller and are designed to implant beneath the surface of the skin, that is subcutaneously or intramuscularly, as shown in the figure. Next, importance. Intrauterine drug dispenser used for local and systematic effect in animal, for local effect post-diagnostic anti anti-fertility agents are cytogenic oxytocin agents are used. Drugs with short biological half of a life can be used. Vaginal drug dispenser used for synchronization of uterus. Synchronization and increase periodicity. For example, Mageston, phlogeston, acetate, midsoxy, पूरा पढ़ने progeston, की जरूरत सर, पूरा पढ़ने की जरूरत सर। storage, and miscellaneous syringes. It includes use gas, gas powdered hypodermic syringes, and motor actual syringes and flexible syringes. Next, used for delivery of vaccines as solutions or powders in fluids, automatic single or multiple dose syringe, single dose dropper vial, spray dispensers, powder must dispensers. Next, form formulation of drug doses forms for animals: solid, liquid, oral, parenteral, paste, pellets, and implants. Formulation of solid, liquid, oral, parenteral, paste, pellets, and implants. Next, solid doses forms. There are many. केवल कैटेगरीज के नाम पढ़ दीजिए सर। अच्छा, tablets, boluses, and this can be overcome odor, flavor, and sweetener. By using this improve acceptance of tablet by chewing animals crush the tablet. Next, flavors that animals prefer include: dog prefers beef, chicken, peanuts, butter, raspberry, strawberry. Cats prefers tuna, chicken, beef, cheese, peanut, butter, liver, butterscotch. Birds prefers grape, orange, tutti frutti. Horse prefers apple, creamy, caramel, molasses, and licorice cherry. Next, solid doses forms. Dosing based on weight. For example, Carl required high dose to be prescribed 15 grams of drug for each 150 pounds of body weight. Thus, 600 body weight cow would require 60-gram drug. So this is complicated. To overcome this problem, capsule shaped or cylindrical shaped tablet, commonly cited bolus,
The instrument used to hold and drop it into the animal mouth is balling guns. It is difficult to give harsh, useful, but useful in cow. Next, these are the different type of syringes which are used in the next. Drugs are given on the basis of weight or body surface. So the labeling of solid dose forms must be stated in milligrams, gram per kilogram body weight. A special tablet bolus is commonly used in providing the large doses. It can range from 3 to 16 gram in weight. Boluses are capsules shaped cylindrical. Boluses are administered by an apparatus called Balling gun. The tube inserted into the animal mouth over the base of tongue, and such animal swallows the plunger is depressed. The bolus is expelled into the gullet of animal after it's swallowed by reflex. Next, bolus administration. Cattle and sheep possible is by pellets except feed additives. Feed additives feed additives permit type A are formulated to certain bulk, drug, and excipient in a time that may easily be taken. The, the feed route is using for mainly prophylactic purposes and growth promotion of animal. The most of the premixes contain grain carrier, rice pulse, corn germ seed, cornmeal, corn gluten, etc. To prevent choke caking, an anti-caking agent as silicon dioxide or magnesium aluminum silicate can be incorporated. Factor considered in formulation: drug concentration, moisture content of the drug and carrier, electrostatic charges, pH, flow of powders. Next, the medications formulated as dry powders for reconstitution, concentrated solutions. Unhealthy animals allowed to drink water continuously. Water is as medium for drug solubility and quick absorption. Concentration of drug in water to be half only. This problem may overcome by its limited solubility. The powder medication is dissolved at the time of administration into water to make a stop solution. Next, in addition, the dry powders are used formulated with sugar as lactose or dextrose. The use of these may cause a buildup of bacteria and fungi in water lines. The drug's stability in water must be stated
in label. Next, solution over liquid dosage form. Solution and suspension, mostly used as aqueous solution. If drug substance is not soluble in water, the co-solvent, super, surfactant, stabilizer complexes agents may be used. Next, why advantage aqueous basis, oil or oleaginous basis, organic solution. Mastitis has been defined as inflammation of the mammary gland due to infection of bacterial or mycotic pathogens. When it occurs in sheep, cow, it gets economical because it reduces the milk production. It overcome by systematic administration of an antibiotic by topical orthopedic treatment. A funnel attached to the tube is held above the head and liquid medication is poured down the known as tubing. Normal dose by this method is 10 ounce. Beef wetting agents are used to increase the flowage, thickening, and suspending agents are contraindicated to resist the flow. The administration of the drug to animals, a funnel attached to the tube is held above the head and these are has an interporous storage bag. Insecticide, dust formulation. Forced use bags are hung in door bays or steps for control of ectoparasites in economic animals. Dipping extensively used method. A dip formulation containing the drug is diluted in a large dipping bath through which the animal is driven. This bath must be long, wide, and deep enough to cause immersion of the animal. It must be non-toxic to the animal but toxic to ectoparasites. Ag- the inflammatories are used cautiously. For example, aspirin, acetaminophen, and ibuprofen are two OTC drugs highly toxic to small animals, cause blood dyskeriosis. At histamines are widely used in small animals to control allergy reactions. For example, diphenyl diamine antidiarrheal are used in dogs. Creams and lotions may be used in animals, although they can be licked off. Next, saving following problems are less impervious, having following problems are less impervious to passage of oxygen than glass, cannot be sterilized by heat, deformed by some product. Next, directions for use. Cautionary statements, name and address of pharmacy, pharmacist dispensing the medication. Next, physical Animal Health Institute, US FDA Food and Drug Administration, Animal Drugs Ability Act 1996, Animal Medicinal Drug Clarification Act 1968, AMDOCA. Next, What drugs Canada, can be legally marketed? abbreviated
Index minor species products. Canada conditionally approves NADA, ANADA abbreviated, and generic medicines, new animal drug applications. Pioneer. Next, जी सर, अब आप अब आपका आशीर्वाद डायरेक्ट इसी विषय फिर मैं 5 मिनट में डिजाइन बना के और चेंज कर रहा हूँ लिंक एनिमल राइट्स पे एनिमल राइट्स पर 5 मिनट बाद। अभी तो इस अच्छा पे एनिमल आशीर्वाद, तब तक इस पे वैसे ही बोलिए, तब तक मैं डिजाइन बना दे रहा बनाई बनाई हूँ। अभी आप मेडिसिन पे और जो इस पावर पॉइंट के आधार पे बोलना चाहें तो कृपया बोलिए। मैं तो उस समय जो मूड था ना, वो तो केवल उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा था कि मैं आयुर्वेदिक को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लूं। तो मैं एक तो एक्विस कैलेंडरस जो है, जिसको कहने के ये भद्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसन है। अबाउट 50 ग्राम ऑफ रूट हम्म, स्टॉक एक्विस कैलेंडरस is pounded with 90-50 ग्राम of salt नहीं and उसका मैं, diluted. उसका आपको मैं पीपीटी बताता हूँ सर। उसका भी जी एक एक इंग्रेडिएंट लेके नहीं, मैं उसका भी देखिए, हर्बल थेरेपी इन वेटरनरी मेडिसिन। थैंक यू जी डॉक्टर अजीत। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये सब बोला। अब इसने बोला टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, तो कहीं वेटरनरी एक्यूपंक्चर एंड एक्यूथेरेपी, वेटरनरी कायरोप्रैक्टिक, वेटरनरी फिजिकल थेरेपी, वेटरनरी होम्योपैथी, वेटरनरी बॉटनिकल मेडिसिन, veterinary nutraceutical medicine, holistic veterinary medicine, then herbal supplements. These are there. So we over edge overview, not one ingredient only. We were so constant. They have discussed. These are some products of the industry, quality control. Then they have given ginkgo biloba number one, Saint John wort number two, ginseng number three, garlic, Number echinacea, 4, echinacea, Echinacea papua, right sir. Saw palmetto, fatty acids from berries, Noripins, evening primrose, बिल्कुल, Anthera vinilis, yes, golden seal means Hydrastatus canadensis, used to treat bacterial and parasitic infection. right sir. Side of Cranberry, action: this is cranberry. vaccination, macrophages, This is to treat interferes with the urinary attachment tract, of the urinary pathogens to the right sir. urinary bladder wall, used to treat urinary tract infections. Hmm. Side effects include diarrhea, stomach problems, and the development of kidney stones. Valerian, khas sir, used to treat hyperacidity in dogs. Valeria officinalis, Hmm. volatile oils in valerian break down the inhibitory substance GABA used to treat hyperactivity in dogs by mild tranquilization and as a sleep, and side effects include hepatotoxicity with long-term use and interaction with other depressant drugs. This is echinacea again, echinacea species. Extracts from shoot, root, and rhizome acts as a acts as Stimulant. immunostimulant, speeds up cycle of cold virus, and acts as immunostimulant, speeds up cycles of cold virus and flu. Organosulfur compounds
from leaves, anti-carcinogenic, antimicrobial, anti-sclerosis, and anti-hypertensive, toxic in high amounts. Next, green tea, polyphenols from leaves, anti-cancer, inhibiting tumor initiation and cell proliferation, antioxidant. Contains over 60 different flavonoids, phenolics, including resveratrol, resveratrol, and catechins. Reduces heart disease by inhibiting platelets aggregation, lowering LDL, low density lipoproteins, and acting as antioxidant. From the rhizome, over 12 ginger, compounds with antioxidant activities greater than vitamin E, anti-tumor, antiemetic, inhibits vomiting. these are plants, sir. Hmm. Advice regard general guidelines are also there. This is general guideline. Manufacturers use herbal therapies in recommendation, avoid herbs with known toxicities, do not use herbs in pregnant or nursing animals, the very young or the very old. Accurate diagnosis of the animal's condition is essential to evaluate all therapeutic options, documents all herb or supplement used in the animal's medical record. थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इनने हर्ब के बारे में लिखा, छोटों को नहीं देना चाहिए, बड़ों को नहीं देना, मतलब समझा नहीं सर। ये डरते हैं हर्ब से? नहीं 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 नहीं, ये असल में कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो छोटे एनिमल्स के अंदर प्राइमरी स्टेज के अंदर नहीं दी जा सकती। जैसे एलोए है, उसके लिए जो है छोटे बच्चों को नहीं दे सकते बिलो 3 मंथ्स ऑफ एज। कुछ ऐसी हैं कि जिनको कि 3 मंथ्स के बाद में आसानी से दे सकते हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिनके लिए कि 6 महीने से पहले नहीं दी जा सकती। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और टॉक्सिसिटी ऑफ द प्लांट्स के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसी कोई जनरल में यदि कोई दवा है जो अपन उसको नहीं दे सकते सर? हाँ, जैसे कि आपका स्टिक्नीन है, स्टिक्नीन जो है छोटे बच्चों के लिए नहीं दे सकते। हम्म। अच्छा, इसी ढंग से एलोई भी जो है वो उसके लिए भी 3 महीने से कम बालों को नहीं दे सकते। जैसे क्या सर? वैक्सीन है, एंटीरेबीज वैक्सीन है, ये सबसे पहले 15 दिन पर लग जाती है, फिर 1 महीने पर लगती है, फिर 6 महीने पर लगती है। तो इसी ढंग से ये डिफरेंट एज फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ड्रग्स जो हैं बनाई गई हैं। बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं कि जो कि बच्चों के अंदर जो एंटीमेटिक्स हैं कि उनके लिए अगर दे दिया जाता है तो उल्टी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसी मेडिसिन के लिए बच्चों को नहीं देते हैं। और आमतौर से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लेवल पर लिखा रहता है कि नॉट बिलो सच एज, इस एज से ऊपर ही देना चाहिए या इस एज से नीचे नहीं ही देना चाहिए। तो ये डायरेक्शंस जो हैं लेवल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि जिससे कि ये कोई भी फिजिशियन समझ सकता है कि इसको जो है हमें छोटे बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बड़े बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये एज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज और अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जितनी भी मेडिसिन हैं उनके अंदर
एनिमल्स के अंदर बॉडी वेट के अनुसार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जनरली क्या दवाइयाँ दी जाती हैं सब? किसमें? जनरल रोगों में, जानवरों के जनरल रोग। जनरल लोगों के अंदर मैक्सेल्फ है, एकोनाइट है, और आपका अब आजकल जो होम्योपैथिक मेडिसिन आ रही हैं वो तो करीब करीब सभी के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब? मतलब जो है अब आजकल जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं हाँ। इनके लिए पूरा अब कैटलॉग आया है कि जिसके अंदर के इनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत मजे से। और उनके फॉर्मुलेशंस जो हैं वो भी उसमें दिए गए हैं। जैसे इसमें हाइड्रॉप्स है, हाँ। स्टिमुलेट रीनल फंक्शन। ये रीनल फंक्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी डिसीजेस के अंदर आप जो है इस इनके अंदर कॉम्बिनेशन है, एसिटिकीन है, डाइथीन है, डल कैमरा है, थेरमफास है, D12 है। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस भी अब जो हैं ह्यूमन बींग में भी आ रहे हैं और एनिमल्स के अंदर भी अब आने लगे। एक गोयल फार्मा है, गोयल फार्मा जो है इस समय यहाँ पर वो बिल्कुल प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। मतलब? मतलब वो जो है वो उनकी पूरी फार्मेसी जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस पर ही वो बेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। और जैसा भी अपन ने प्रेजेंटेशन में भी दर्शकों को बताया कि होम्योपैथी भी दवा है, ऐसा नहीं, नहीं है। होम्योपैथिक दवा जो है इस हाँ। समय कॉम्बिनेशंस जो है करीब, क्योंकि असल में वो सब्जेक्ट नहीं था वरना हम इस समय आपको बोलते थे हम्म। कि करीब करीब इस समय 55 मेडिसिन जो हैं हम्म। होम्योपैथिक वाली वो जी। यूज कर रहे हैं हम, कि जिससे कि कॉम्बिनेशन उन्होंने दिए हुए हैं। और हम्म। उनकी डोजिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है। कहीं पर जो है 5 ड्रॉप्स है, कहीं पर 30 ड्रॉप्स है। तो अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से उनको करते रहते हैं। ये अब होम्योपैथी की लगभग 56 मेडिसिन जो हैं इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं